Okay. So good morning. And as I said, that whatever we'll be speaking in this meeting, it will be only relevant to stock market. The presentation came into being, and today we are conducting because as one of our course mate Jay asked us to what do to our current investment. If we are invested in market, then how we should react in current market situation, whether to hold it or to sell it. So first of all, I must tell that I'm not an investor. I'm a swing trader. And if somebody is not aware the difference between the two methods of trading, then you can go to YouTube to get a plethora of info about the same. There's very clear cut videos are available. Many videos rather there are available. However, irrespective of type of trader you are or whatever methods you follow in the market, the most important thing is to know that in what kind of market environment you are operating. That's build the preamble for today's topic called situational awareness. If you are aware about the situation, then it will help to arrive at a decision whether your strategy or method of trading, investing will work or not. So if it is working, then keep your hard-earned capital exposed to the market, else sell off. Pull out the cash, sit aside, sit in cash because it is hard-earned, as I said. At the end of today's meeting, you will get a considerable clarity about what action you must take in such kind of scenarios. So today is 17th August, 17 August 2025, and let's deep dive into the situational awareness and understand what it is exactly. So first of all, why we need to understand situational awareness? Because clueless is dangerous, right? So if we are operating in a market, then we have to know the things, what is happening in the current situation, in geopolitical situations, economic situations, in the neighboring countries, in our country. There are some tangible things. There are some non-tangible things like emotions, how the people are reacting to the market. So all sorts of things. And so one has to be aware. So aim is to understand and assess the market environment, both macro and micro, that is world level and national level, and find out the current market conditions. If it is conducive for our type of trading, that is positional, swing, or intraday, or not. So let's understand what is that macro and micro. At macro level, we have different ecosystems. So what do you mean by ecosystems? Ecosystems, or we can say that the combination of different market ecosystems give us the data of world market. When we speak about world market, it is the macro level. So within the world market, there are different ecosystems. US markets, it forms an ecosystem itself. DAX, UK market, Hang Seng, Hong Kong market, Chinese market, Indian market has a different ecosystems. The currency market, Forex, they have different ecosystems, commodities, cryptos. So all forms a different ecosystems. And as I said, within all these ecosystems, Indian market has its own place, which also have a significant say in the world market arena. That means if we understand all the market ecosystems, including our Indian market, then we can arrive at a decision whether we can expose our capital or not after understanding the situational awareness. So here you see the world ecosystem. The smart act is depicting the world and its corresponding micro ecosystem. You see here the world ecosystem, US market. So US market has this triple Q, that is NASDAQ, SPY, that is Standard and Poor 500, SPY, that is the short form. Russell 2000, acronym is IWM, US VIX.
currencies generally, what I follow is dollar index, UDS नहीं, ये गलत टाइपिंग हो गया है, USD INR it is, right? Then it is the bond markets. I'll just amend it. Bond markets, bitcoins, cryptos, metals affecting such as copper, gold, and silver. What does copper? Copper is called the industrial metal. So if copper is an important commodity for each and every industry, whichever industry you go, you will find copper at one of its raw material. So copper, monitoring copper will give a lot of insight. While gold and silver comes as precious metals, they also affect the market in a different manner. All this we will understand today. Chinese market, Hang Seng Bees, Hang Seng, and they also affect largely in our market. And also to understand ki, okay, how our market is performing through understanding the large cap, mid cap, small cap. We will look into the India weeks. And finally, our own watch list that we have created. Own watch list is a very important thing because after a lot of deliberations, identifications, many people go for Twitter, many people go for news, many people watch TV, business, G business and all. So they find out how the market is going to behave today. So this is what it is called the world ecosystem, and these are the micro ecosystems. Many people also follow DAX, that is UK markets. So now I generally consider these many ecosystems only, while many other pro traders consider a lot many also. Many also consider Russia's, many go for the European markets very strongly, they wait. I feel this much is apt or enough to arrive at a decision for me that has worked. Anything adding more, I feel that the things will become more complex. So here we'll discuss each ecosystem one by one. Then we will assess the world ecosystem, because this, what I feel that if we analyze each of the ecosystems, this will indicate how the world ecosystem is performing. There was a saying by Charlie Munger, who is the 2IC of Warren Buffett. He says that okay, every person has his own area of competence. You have to basically get clear about your circle of competence. So in that circle, each point you should be aware of. Do not elaborate it, else it is very difficult to accumulate back. So for me, I found this much is enough to understand the world ecosystem. In case somebody wants to elaborate this list, he or she can do so. There's no issues in that. One can do also. So here let's discuss this. And before that, before understanding each ecosystem, I will discuss with a yardstick. So the yardstick, here I am using the famous trader Oliver Kale methodology to assess every micro market. It is not a rocket science. First of all, do not get confused by seeing all these things. I'll explain to you in detail each aspect that is being displayed here. So let's understand the concept. So here you see Oliver Kale, he has used two EMAs. One is 20 EMA, the blue one, and red is 10 EMA. 10 EMA is shorter term and 20 EMA is longer term. Fine. And by using this, we will decipher how our counter is performing. When I speak about counter, or when I use the word, utilize the word counter, it means it can be the stock, it can be the indices, it can be the Bs, whichever. It is applicable to each and every kind of thing. Most importantly, when I say counter, it depicts price. Okay. So apart from 10 and 20 EMA, I am also utilizing 30 SMA also. And same I will be utilizing in my chart when I will display you. It is in yellow color. So you will get to know when I will show you. Same. EMA is exponential moving average. Again, if you will ask me what is exponential moving average, a lot of short videos
of 3-4 minutes are available in YouTube. You can go and see that. But you can have a good hold of thereafter EMAs. That is very simple to understand. And I believe that those who are attending, some of them will be aware what is EMAs and moving averages and all. So the most important property of EMA is that I must tell, which we will be utilizing here. It represents the price in a more smoother and logical manner. If you see this black line is price, then this price is moving up, these EMAs are moving up. When the price is moving down, EMAs are moving down, right? Okay. So here you see that when the shorter EMA 10 is crossing the longer EMA, then the counter is considered to be in, when it is crossing up, then it is counter is said to be in uptrend. And when it is moving up like this and coming down, again crossing back, the shorter is crossing back down, the longer one, then it is said to be in downtrend. So these crossings will decide that whether the stock is in uptrend or downtrend, or the counter is uptrend or downtrend. Fine. So this crossing is very important. And before, always understand one thing, this crossing do not take place on its own. It is the price movement causes this crossing. So the price is supreme, that's why. And if price doesn't move up, then it will not cross. So crossing is very important, and we will be utilizing this aspect to understand. So now we have understand the yardstick. Let's understand the relationship of micro markets in Indian context. Since we are analyzing each micro market and world market in terms of our Indian market context, so understanding the relationship is very important. So gentlemen, we know that the meaning of directly proportional and inversely proportional, right? When we speak about directly proportional, if one thing is moving up, the other thing is also moving up. And inversely proportional means if one thing is moving up, its counterpart is moving down. Or we can say that if these stocks, if these counters or the indices, they are directly proportional to Nifty 50. So when we speak about Indian market, we will be speaking about 500. We'll speaking about Nifty 500. Why Nifty 500 we are speaking? Because Nifty 500 is the broadest indices available in our market, in which there are 500 stocks are available in that, right? So that's why we always find out that whether the Nifty 500, how it is reacting to the US market, how the Nifty 500 is reacting to the gold, copper or silver, how Nifty 500 is reacting to small cap, how it is Bitcoins and cryptos, PSU and private banks, and own watch list. Also, some market leaders you will find out. They will also giving you some kind of leading informations about how the Nifty 500 is working. Now, why I took this kind of markets? Why I took these parameters? You must understand the reason. Because it is not only that I am saying and you will just tell it, okay, ये बता रहा है and he has a lot of experience, so whatever he is stating, it is correct. Yes, that is one aspect. But let's understand the logic behind it. So if you see, US market is taken as the largest ecosystem. A lot of ups and downs we are aware that in the world takes place because of the US markets. So following US markets is indispensable and we have to follow it. There is no choice with us, rather. Biggest economy in the world, that's why. So for this to monitor, we monitor S&P 500, Standard & Poor 500, NASDAQ, and as I said, Russell 2000. Gold and copper, gold and silver are the precious metals. They're the only precious metals, and they have a considerable say in the world market also, right? So copper, as I discussed already, that it is the industrial metal. Without that, industry cannot function. If supply of raw materials are there, then industry will boom, right? So the same concept Dow has also used by using Dow Jones Industrial Average and Dow Jones Transport Average. So for 2 minutes, I'll give a brief insight about that also. When we speak about Dow Jones Industrial Average,
and Dow Jones Transport Average. So a industry manufactures some products, right? And they're being transported by another group of counters, kind of thing. So when the products get produced, that counter will start moving up because they will start selling. It becomes popular. It becomes popular in market. Consumers, peoples, they will start buying it, and it will go up, right? I'm speaking in terms of products, not in terms of buying or selling of shares in the market, not in the stock market, in the general market I'm speaking about. So how they will start buy and sell? So they can only buy if a product is there in the dealer, in the shop. Then only they can go to the dealer and buy that thing. So before that, it has to be transported. So when the transportation has been carried out, then only the product will reach. So that means transportation of any product or the logistic channel will help us to understand that the product has reached. So that means the price or the stock price of that or the sector of that logistic channel. It can be shipping industries. It can be the transportations, land transport, air transport, cargoes. So suddenly their activities increases and products start reaching to retailers or consumers. So that is one of the indication that okay, market is going to perform. So that's why Dow, what he studied, Dow Jones, and he studied the transport and find out the interrelation between them is that whenever Dow Jones move up, before that, the transportation takes place. So Dow Jones transport average starts moving up first, then Dow Jones. So that's why they are directly proportional to each other. And whenever the market has crashed, also you will find yourself the Dow Jones transport average has crashed fast or went into downtrend fast before the Dow Jones industrial average. So keeping this thing, this prelude, this perspective in back of mind, we have arrived to such kind of ecosystems. So PSU, private banks, they are also very important because for any country, when we speak about economy, it is all about paisa, money. So if PSU or private banks, they are not performing, so then what is happening? Why? When PSU and private banks do not perform, can somebody tell? Anybody? Do not hesitate. Any brief, any whatever lame ideas you have, you can just, someone can bring out. Sir, probably their NPAs are in control. They have got a good balance sheet, expanding the loan books and the retailer acquisition. Probably these are the indications which, and more so, what government is taking out of that is also to be kept into this thing, and that is probably the reason because of which PSUs for very long term, I think more than a decade or so, they were not performing. So Okay. I think these are the things that we notice while observing PSU banks, and private banks factors remain same: NPAs, loan books, and their basically the interest generated. So these are the things I Okay. think one should be observing. Okay. One Okay. more thing, sir, most importantly, what I feel is that banks पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? Banks का पैसा is mainly in from giving loans to the people. Correct. लोग लोन ले रहे हैं, तो सामान खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ रहा है, मतलब कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट बढ़ेगा. सो बेसिकली मतलब अगर बैंक्स अच्छा कर रहे हैं तो मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और इकोनॉमी अच्छा करेगी तो स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा. Okay. Understood. You are rightly brought out. Both are in general line. Both of you are correct. The most important thing is that whatever you have brought out, it encompassed whatever we are planning to, I wanted to convey, right? Because financial structure of a economy is the important backbone of a country. And if that crashes, then the whole economy crashes. It's that simple. And what happens? Why private banks, PSU banks? So as Dodeja has brought out that people take loans, and without loans, a normal middle class family will not able to sustain his or life in this inflated scenario kind of thing, or we call it to beat the inflation kind of thing, right? Salary is not enough to beat the inflation, so one has to take a loan to sustain his or life. So what happens when a market is about to crash, right?
So people will pull out all their investment, pull out their FDs, pull out everything from the general market, from the banks, and they will start investing in stock market. Because stock market create that compelling situation that will lure you to pull out your money from the surroundings and put it in the stock market. So when these things happens, so people also pull out the money from the banks, private banks, wherever they are put in. Many people take good loans, strong loans. But what happens? Since the market is crashing, so they are not able to repay their interest now. This is another aspect. Now, what we have done, we have taken loan from the banks, and we have invested in stock market to get good profit. But market is pumping down. If it is pumping down, then how you will make profit? If you are not making profit, you are in a stressful situation. And what is happening? You are not able to repay the loan, not able to repay the interest. So as a result, who is at loss? Banks. So it is not that the scenario is not like that. Okay, market in 1 day or 2 days it will go down. It will give adequate indications before going down. It will give adequate indications since 3 months, 4 months, sometimes 8 months also, right? So it will give you adequate indications, but people are not able to catch those indicators. What are the market? When we call as battle indicators in our terminology, right? So we have to understand what market is our mentor also, as well as our enemy also. We learn a lot from the market, but when market come into its own औकात, तो पूरा फिर वो पैसे लेके चला जाता है, right? So that's how financial structures are important. Our own watch list is very important because own watch list, as I said, we put a great deal of effort to finding a lot of stocks. वो पड़ोसी वाले से पूछ लिया, कभी ऊपर से पूछ लिया, कभी ट्विटर में देख लिया, some YouTube channel you follow, that guy also tell you. You are in certain WhatsApp channel, Telegram channel, from there also you get to know. So slowly and slowly you build up a watch list. Okay, I will see this, I will see next day, right? So that also tell a lot of things about the market, because own watch list are created from own mindset. Remember one thing, we only mix with those people of our interest. Our interests are generated from our psychology, our mindset, right? So that means whatever friends you are having or you had till now, till today, till this moment, all those people are born out of your mental state or your psychology. Your psychology or frequency is matching, that guy is becoming your friend. So similarly, your psychology and mentality or frequency are matching with certain stock, so they are coming into your watch list. So that's how your watch list are built up. So coming to some counters, they're inversely proportional to Nifty 500 dollar index, right? Dollar index comprises of approximately 5 stocks, 5 to 6 currencies. You can just go and Google it. How much currencies, what weightage they are having in dollar index, you can find it out. So dollar index is different and USD INR is different, right? But both are generally function in complement to each other, right? Sometimes dollar index reacts fast and then USD INR, and at times I have found USD INR is acting fast as compared to the dollar. But they always work in tandem. Both are co-brothers and they keep on functioning in that way. India VIX. So that means what? Here, what is happening? This dollar and USD INR, they give a advanced signs. When the dollar and USD INR is moving up, then Nifty is likely to move down. Many a time it moves down also, right? India VIX, it is again inversely proportional. India VIX, many people tell that it is a meter chart for fear and greed kind of thing. Yes, we can consider that, no doubt. But I take it simply what it is trying to say us, simply whatever is visible in the charts. Bond markets, bonds markets, they also are inversely proportional to Nifty 500. And when we speak about China, so पूरे पैसे निकल के कहाँ है? Chinese market में घुस जाते हैं, Indian market से निकल के. Most of the time you will see that. So whenever Chinese market starts performing, Indian markets go into downtrend. US weeks also give a good amount of indications ki okay, how things are panning out at world arena. The fear and greed factor also, and also in terms of, as we spoke in the previous slide about the 10 and 20 EMA, right?
So now let's move ahead, gentlemen. Now what we will do, we will blend the yardstick and this relationship chart. So if we blend, so we get this. So what you have done, we blend the directly proportional counters, the inversely proportional counters to our this thing, and also this Oliver Kale's concepts or methodology that we have used. And with this, we come to know, okay, world ecosystem in term, we find out the world ecosystem in terms of Indian context. Never anticipate in market, only react to the price actions in relation to EMAs, right? So when we speak about this complete mix and mixture blending, understanding the world ecosystem, we arrive at what? Situational awareness. So this complete methodology will help you to arrive at, okay, how the world is functioning, and as Indians, where our market is lying in this world market. So as I said, here we will only follow the EMAs, we'll only react to the price. This black line depicts the price of any counter. And we will only, for example, as I'll give an example. We will only open the umbrella when it rains. Umbrella तो carry करते हैं साथ में. But we never open it before it rains and keep roping throughout the countryside. है ना, अम्ब्रेला खोल के थोड़ी अच्छा आज बारिश होने वाला है, चलो अम्ब्रेला पहले से ही खोल के घूमते हैं. So it is not like that कि we keep it open and then keep on roaming around. बारिश होता है तभी खुलती है. So similarly in market also, out of my experience I am speaking out, just react to the price. Do not extrapolate things a lot, over speculate or over anticipate a thing and then do it. मुझे लग रहा है बहुत डिजास्टर फ्रेज है ये, मुझे लग रहा है, लगना नहीं है. हमारे लगने ना लगने से मार्केट कभी फंक्शन नहीं करता है. वट एवर यू सी, यू जस्ट act as per that. Hope is a important thing. One should hope, but hoping without a plan is a great disaster. हमें लगता है कि हम ऑब्जेक्टिव कैप्चर कर लेंगे दुश्मन के, वो होप कर रहे हैं हम, राइट? सो इट कैनॉट बी, वेरी डिफिकल्ट without a plan. So speculate within your facts and figures that are visible to you. The datas that are with you will help you to speculate. But sitting idle and sitting in front of a news channel and WhatsApp, Telegram, and then speculating, it will make you bankrupt. So now we have understood. And if you see, now let's do one thing. Let's see everything on chart now, okay, how this is affecting, and then we will get to know how this situational awareness is panning out. And currently, as per this situational awareness matrix, where we are standing. So this is the watch list generally being used. Is my screen visible to all of you? This chart is visible? Yes, sir. Okay. So let's see, this is the Nifty 500, our Indian market. Why I consider Nifty 500? Because Nifty 50 is also included in this. Our small cap is also included in this. Even mid cap is also included in this Nifty 500. So that's why I generally consider Nifty 500 as the prime indicator to help me to arrive at certain conclusions or some decisions. So you see, we just discussed, these are the counters that are inversely proportional to our market, and these are the counters, they are directly proportional to our markets. We'll understand the private banks, the leaders, the watch list, right?
So let's understand one by one what is happening. This has to be analyzed in a weekly because we are going to have a larger perspective. So weekly and daily charts will be used. This is weekly, this is daily, right? And only these two will be utilized to understand the situational awareness. Okay, let's understand the inverse one first, because the thing which are affecting negatively to our market has to be hold responsible first. So if you see, this is the dollar index. This is that famous COVID fall happened during this time. It came down. Thereafter, it recouped. It moved up. And during this period, the Russia-Ukraine crisis was going on. And then it went up. When I speak about went up, how it went up, here it is displaying the crossovers. Right? You see the crossover, as I said, this green one is 10. This green one is 10 EMA. And this red one is 21 EMA. Now you must be thinking, okay, वहाँ पे तो तूने 20 EMA पढ़ा है, यहाँ पे 21 EMA क्यों? It is irrespective, right? It is very important to understand what is working in the market and what is not working. For Oliver Kale, 20 EMA is working. For me, it is 21 EMA is working. Even additional, I have used here 30 SMA, right? So with these three tools, these are the movement of price you see displaying. And if you understand that, if you take your mind back to the Oliver Kale's chart that we have studied, in that, if you see the some such kind of, it was depicting some kind of cycle like this. Fine. So this is the market cycles that every stocks, every counters, every indices goes through, right? It is very simple. Moving up means uptrend, sideways and downtrend. Again sideways, again uptrend. So this is how generally each counter functions in a sinusoidal wave manner. So what is happening here? The dollar index, yeah, of course, when you utilizing this cycle, you must understand the support and resistance. No big deal in drawing support and resistance. You have to join the lows, pull a line, join the highs at different, the place where prices are reversing. Just join them and draw a line. Here also we see some prices are joining this point and this point, and we extend, right? So this becomes generally the area of interest. I do not take decisions. This line becomes areas of interest. Generally, people take decisions. I see how the price are reacting. You see, price was here sideways, and here it did what? This considerably, this you see this price candle breaking down, retesting this, and further moving down. So this is becoming some kind of area of interest. When I am drawing this same thing in line chart, it is clearly understandable. Fine. So what we are trying to find it out in terms of situational awareness, it is very simple. Here you see the crossover has already taken place. And in this crossover, the price has also moved considerably down, right? So dollar is down. Since dollar is inversely proportional to our market, so how our market was behaving during that time? Our market was moving up. Nifty was moving up. Fine. Just a second.
So here our market is visible here, right? This is Nifty 500 and we are comparing both these charts with each other. So that's what we are doing here. Fine. So we see here our market is moving up. This is moving down, right? And from here on, 3rd April onwards, market started performing. It went into sideways, kept on wriggling, right? This is the place you see here, right? And if we go to daily chart, in daily chart, it is more clearly visible, this cycle you see. So in daily chart, what exactly I see, whenever this crossover of dollar, you see 1021, is it visible to all of you? 1021. I hope you can identify. Somebody can confirm, please. Yes, sir. Clearly visible. So whenever this 1021, it is coming below this 30, you see this is trending down beautifully, right? And when it is coming to sideways, then it is clear-cut indication that the things are going to turn bad now when it starts moving up. So what is happening here? Let's understand here also. It was in sideways here, our market is trending up. Dollar moving up, our market trending down. When dollar was consolidating here, our market was also consolidating, and dollar down, our market up. So now again, you see I have drawn a support here. What we saw here, क्या हो रहा था यहाँ पे? यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा, फिर गया. Then it broke. You see this line, this white line you see. When it came down, again it retested this white line and came down. इतना ही दिख रहा है हमें, जो हमें मार्केट दिखा रहा है वही हम बात कर रहे हैं. So here also what we are seeing, this moved up, came down, now it is retesting this support after breaking it. तो साइडवेज भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है. बट ये अगर कहीं पे भी जा सकता है, जस्ट सेकंड, कुछ ज्यादा ही क्लिक हो गया ये. अगर ये कहीं पे भी जा सकता है तो दो चीज होगा. अगर साइडवेज जाएगा तब भी ये नीचे आएगा, अगर नीचे जाना है तो इस लाइन को ब्रेकआउट कर देगा. दो ही चीज करेगा. बट इसको यहां से ये आएगा तो पक्का है. यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि पैटर्न यही है, मार्केट चलता ही ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करके वो चलता है. वो 3 इडियट्स वाला अप डाउन नहीं है जो उसमें जिप अप डाउन करता है. फाइन. सो इट इज दैट अप डाउन ओनली. सो दैट इज द थिंग. सो जनरली ये आ सकता है यहाँ पे, या फिर नीचे भी जा सकता है, बट इस जनरल एरिया में आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है. दैट इज माई टेक. सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भी ब्रेकआउट देके फिर ये नीचे आके फिर जा सकता है. देन अगेन इट विल रिटेस्ट दिस लाइन, ऊपर से रिटेस्ट करेगा एंड फिर ऊपर चला जाएगा. ये भी हो सकता है. बट व्हाट वी हैव डिसाइडेड, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, सो वी हैव मेड ए माइंडसेट कि अगर यहां से रिवर्स होता है देन व्हाट आई हैव टू डू. अगर यहां से ऊपर काटता है देन व्हाट आई हैव टू डू. नाउ यू आर क्लियर अबाउट द एक्शंस. So we are reacting to the market now. So when price is there, we are just acting to the price. Fine. Okay. So dollar, you see what has happened here. ये दोबारा क्रॉस कर गया. देखो यहाँ पे क्रॉस किया था ना, ये नीचे आ गया था. Now this 1021 immediately crossed, displaying some sign of strength. Again it came down. Now these twin brothers 10 and 20, they are above this 30 SMA and they are sustaining above this 30 SMA in dollar. Again, it is depicting some kind of weakness. So dollar, what it is stating us, some kind of weakness it is stating us. USD INR देखते हैं, ये तो और भी डॉलर का बाप निकला है. You see here it is moving up, making beautiful head and shoulder pattern जो सबको दिख रहा होगा आई थिंक यहाँ पे, है ना. ये जो बना रहा है यहाँ पे पैटर्न, है ना. और इसको ब्रेक करके नाउ इट इज साइडवेज. जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक होने के बाद जनरली प्राइस गो इनटू साइडवेज बिफोर मेकिंग ए फर्दर मूव. सो व्हाटएवर पैटर्न इट इज मेकिंग हियर, इट इज मेकिंग सम काइंड ऑफ
फ्लैग पैटर्न, जो भी पैटर्न बोल लो, इसको फ्लैग बोल लो, सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशंस बोल लो। धीरे धीरे तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे चीजें जो है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ये बड़ा था, ये ऊपर गया, फिर छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, है ना। और ये एक इतना बड़ा बेस से अगर ये लॉन्च पैड बना के तैयार हो रहा है यहाँ पे और ऊपर जा रहा है, तो ये तो नीचे जाने के लिए तो ऊपर नहीं जा रहा है ना, ये तैयारी कर रहा है कुछ और की। ठीक है, तो ऊपर की तैयारी कर रहा है करके लग रहा है हम। और ये हमें क्यों लगा? क्योंकि डाटा बता रहा है, चार्ट बता रहा है वही चीज, राइट। यहां से ऊपर गया, हमारा मार्केट कहाँ गया? निफ्टी 500 नीचे आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया, ये नीचे आता गया। अब यहाँ पे दोबारा क्रॉस हो गया, देखो, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, अब ये दोबारा क्रॉस हो गया, फिर काफी ऊपर चला गया है यहाँ पे। ठीक है, इफ यू सी हियर, यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा होगा एक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, सेम बना रहा है, बट ये गया था ऊपर, यहाँ से नीचे नहीं गिरा था। सो इफ सच काइंड ऑफ consolidations in market you see, it is depicting that it will go up only. Fine. So again it is stating that dollar is in strength, USD INR is in strength. That means Indian rupee is values is decreasing and dollar value is increasing, US dollar value. So it is detrimental to our market. Now let's come to India VIX. India VIX weekly. वीकली में कभी ये चीजें दिखता है ना, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे टेल दिखते हैं इनमें, तो दैट इज द टाइम वी शुड बी स्लाइटली कॉशियस। कोई अगर स्टॉक में हो तो उसको स्ट्रेंथ, उसको प्रॉफिट बुक कर लो आधा, अगर प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल हो उसमें। इफ यू आर इन लॉसेस, फिर भी पार्शियल पोजीशन बेच के बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि मार्केट में क्या होगा हमें किसी को पता नहीं है, राइट। सो कमिंग टू डेली चार्ट, देखो डेली चार्ट में क्या हो रहा है, बढ़िया डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे। जब ये डाउन चल रहा था तो हमारा मार्केट बढ़िया ऊपर चल रहा था, निफ्टी 500, विक्स वाज डाउन, फियर वाज लेस। सो नाउ यू सी दी अगेन दिस गाइज आर अपीयरिंग, दिस टेल, स्ट्रॉन्ग टेल्स, राइट। ये क्रॉसओवर भी ऊपर हो गया है। हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज आवर मेन स्ट्रक्चर विच इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड। कौन सा? 30 SMA, दिस वन इज 21 EMA एंड ग्रीन वन इज 10 EMA। तो इससे पता लग गया हमें, ठीक है। तो कुछ पुराने चीज दिखा रहा हूं मैं, फिर करंट सिचुएशन इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू विल हैव ए गुड, और यू विल बी मेंटली सेटिस्फाइड कि ओके ये जो बता रहा है बकवासबाजी नहीं कर रहा है, लॉजिकल दिखा रहा है यहाँ पे। एंड पहले भी मार्केट वैसे ही परफॉर्म किया है। जब ये डॉलर देखो इंडिया विक्स नीचे जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर साइडवेज हो गया है, चीजें और वोलाटाइल हो गई, यहाँ पे देखो कितने छोटे 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 चल रहे हैं, कितने वोलाटाइल है ना। वोलाटिलिटी में क्या चल रहा है, ये डाउन चल रहा है, ठीक है। हर जगह तुम्हें क्या है ना, एक टेल दिखेगा या तो लंबा सा वीक दिखेगा, इसमें लंबा सा टेल दिख रहा है या तो लंबा सा वीक दिख रहा है। ये तो टेल वीक दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे 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 यहाँ पे दिखा रहा है कि छोटे छोटे हो गया, तो क्या है, कंसोलिडेशन में चला गया ये। फिर यहाँ पे देखो और छोटा छोटा हो गया, यहाँ पे जितना छोटा हो रहा होता जा रहा है, थिंग्स आर बिकमिंग मोर गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ गया इसमें, एक्टिविटी बढ़ गया इसमें, चीजें खराब हो रही है। निफ्टी भी देखो, ये 500 भी देखो नीचे आ गया इसके। ये हमारे येलो लाइन इज व्हाट, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा के नीचे this 10 and 21 is down, again stating what, weakness. bonds, बॉन्ड मार्केट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कभी बॉन्ड मार्केट देखो, ये तो नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी देखो जब डाउन ट्रेंड, ट्रेंडिंग डाउन हो गया, यहाँ पे ऊपर हो गया। यू जस्ट हैव टू फिट दिस काइंड बॉन्ड मार्केट in the current scenario, okay, you can fit this bond market with the world news coming. News are flooding about Trump and its strategies, that it is a market strategy it is utilizing to pull money and prove that US is supreme. Fine. So all those things will affect Indian bonds, USD INR and dollar. Biggest war is the tariff war that is going on between the different countries. And if we speak about tariff, tariff is बहुत सिंपल चीज है, वो है पैसे को डिपेंड करता है टैरिफ, कि मेरे को इतना तू पैसे देगा, इतना तू मुझे टैक्स देगा, तभी जाके देन आई विल अलाउ यू, right? So all the sanctions, all the tariffs, all the trade wars, it is only speaking about capital, money, paisa. So for that you have to understand the currency market also, right? So currency market में हमने major currencies को पकड़ रखा है यहाँ पे, डॉलर इंडेक्स एंड द डॉलर, right? डॉलर इंडेक्स comprises of 5 currencies, right? So that is important.
यू सी 30 ईयर बॉन्ड ऑल्सो, ये भी दिखा रहा है ऊपर ब्रेकआउट कर गया है, ऊपर चला गया है ये यहाँ पे, ठीक है। दो इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ वन कैंडल नीचे आ रहा है, बट इट इज नॉट सफाइसिंग द थिंग। वी वांट टू सी ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैंडल, एंड ये हमारे लक्ष्मण रेखा के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक चीजें स्टेबलाइज नहीं होगा। ये देखो, ये ऊपर था, नीचे आया, हमारा मार्केट ऊपर भाग गया, ठीक है। हैंगसेंग बीज, एज आई सेड, अंडरस्टैंडिंग कि पैसे कहाँ जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैंगसेंग बीज जब ब्रेकआउट दे रहा है तो सबसे खराब चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे इधर ब्रेकआउट दिया था, एंड अपना मार्केट जो है नीचे चला गया, फिर ये साइडवेज गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की थी, ऊपर जब गया तो और नीचे आ गया हमारा मार्केट, ठीक है। अब ये भाई साहब जो है, इट हैज कम इनटू सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशंस। you can say whatever pattern it is making, you can say this is making some kind of cup, and this is that handle pattern kind of thing, ठीक है। so whatever pattern it is making, it has broken the level and moved up. so पैसे कहाँ जा रहा है? चाइनीज मार्केट में जा रहा है अभी, ठीक है। तो हम जब पैसे बोल रहे हैं तो ये पैसे बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, द बिगेस्ट प्लेयर्स, द मार्केट मेकर्स, द इन्वेस्टर्स, फंड हाउसेस, उनकी बात कर रहे हैं। हैंगसेंग ये तो पहले से ब्रेकआउट करके बैठा हुआ है ऊपर, ये तो हैंगसेंग इंडेक्स है ना, ये पहले से ब्रेकआउट होके कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाके ये तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब ये काफी दिन यहाँ से इसने तैयारी कर दी है। जब कौन सा तारीख था ये? जब हमारा मार्केट ये लक्ष्मण रेखा को नीचे गया तो ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, एंड यहाँ पे हैंगसेंग 20 में देखो ये अभी ऊपर गया है। तो अगर हैंगसेंग इंडेक्स कोई अगर मॉनिटर कर रहा था तो हैंगसेंग 20 में ऑलरेडी ये पैसे घुसा दिया होता अभी तक, ठीक है। प्लीज डोंट आस्क मी कि मैंने पैसे घुसाए कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। गोल्ड फ्यूचर्स साइडवेज जा रहा है, एंड एट टाइम्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एट टाइम्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑल्सो। यू सी यहाँ पे देखो, ये ऊपर जाने की चला गया तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, हमारा मार्केट भी ऊपर चला गया। सो गोल्ड एंड सिल्वर हैज टू बी असेस्ड अगेन, अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंप्लीट मार्केट। ज्यादा क्लू नहीं मिलता है इससे, बट यस, इफ यू सी हियर, जब जब ये लक्ष्मण रेखा यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर ट्रेंडिंग हुआ है तो मार्केट को खींच के ऊपर ले गया है। पुराना भी चीज वही बता रहा है, ये ऊपर गया है तो हमारे मार्केट को खींच के ऊपर ले गया है। तो दैट इज हाउ गोल्ड इज वर्किंग, सिल्वर इज वर्किंग, राइट। यूएस विक्स, यूएस विक्स धीरे धीरे नीचे है, लक्ष्मण रेखा के नीचे है, साइडवेज भी है। कोई टेल दिख रहा है? कोई नहीं टेल दिख रहा है यहाँ पे। तो चीजें यूएस में खराब नहीं हुआ है, राइट। तो अगर यूएस में खराब नहीं हुआ है तो इंडिया में अगर ये ट्रेड वार वाला न्यूज, एवरी न्यूज टेक टाइम टू सेल डाउन। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी लाइक दैट, ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट कि इट विल टेक टाइम टू सेल डाउन। हमें कोई अगर डांट भी देता है या ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ था या दोस्त से कोई तू तू में हो जाता है, तब भी हमें टाइम लगता है ना थोड़ा सा सेल डाउन होने के लिए, उसके पैचअप करने के लिए। देन वी मेक कवर आवर माइंड, वी टेल कि चल इससे दोस्ती दोबारा कर लेते हैं, है ना। सो सिमिलरली कोई भी न्यूज, कोई भी डेंट, इट टेक्स टाइम टू टेक इट्स ओन टाइम टू हील, राइट। तो इसको सेल डाउन होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि यूएस मार्केट ठीक चल रहा है, एंड ये वोलेटिलिटी इंडेक्स से पता लग रहा है कि कोई भी हमें वो लंबे लंबे टेल वाले नहीं मिले या लंबे लंबे विक्स नहीं मिल रहे इसमें, राइट। और वीकली चार्ट में भी देखोगे तब भी हमें कुछ खराबी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चीजें जो है बहुत आसान तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से नीचे जा रहा है, ठीक है। सो कमिंग टू द काउंटर्स, दोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एसपीएक्स यहाँ पे ये बॉटम किया, हमारा मार्केट भी बॉटम हुआ, फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, हमारा मार्केट भी ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, ट्रेड वार स्टार्ट हो गया तो ये नीचे चला गया, ये तब भी ऊपर जा रहा है, राइट। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग्स विल सेटल डाउन, तो हमारा मार्केट भी अपने आप इट विल resume this course. Why I am anticipating? Because some kind of divergence detour is okay, but can the dent is never a permanent. It will always resume its cycle. यहाँ से नीचे भाग जाएगा या यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा या तो ऊपर जाएगा, बट इनवेरिएबली ऊपर जाएगा, चाहे आप मान के चलो 15-20 दिन में लेके
1 महीने के अंदर अंदर ये ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेड वार टैरिफ वार चल रहा है, इट विल सेटल डाउन विद इन दिस टाइम फ्रेम, अगर इसको सेटल डाउन होना होगा तो, राइट। अगर नहीं जा रहा है तो देन इट इज ए लॉन्ग टर्म, एंड देन वी कैन कॉल इट कि वी आर इन टू ए लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, अगर ये 1 महीने में सेटल डाउन नहीं हुआ तो। दैट इज माई टेक, अगेन माई पर्सनल टेक. So I will react accordingly, because we have to, with these facts, figures, and these counters, we have to make a bias in the market. So that bias has to be made after deep studies of these things. Russell, it is going up again. This is the small cap index of US market. Triple QUC, it is going also up. यहाँ पे क्रॉस होके ये ऊपर जा रहा है. DAX, यूके मार्केट, ये तो बहुत एवर परफॉर्मिंग है. पता नहीं ये ब्रिटिशर्स क्या खाते हैं, क्या करते हैं, इनका कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है. बट दिस यस, यहाँ पे अफेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ दिस इजराइल क्राइसिस. फिर ये ऊपर जाने की तैयारी में है, एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है अगेन. इसका लक्ष्मण रेखा अगर आप देखोगे तो येलो लाइन इज ट्रेंडिंग अप. आवर स्मॉल कैप, इट इज डाउन. स्मॉल कैप अगर आप देखोगे तो इक्वल टाइम फ्रेम में ये सब डाउन हुए थे, राइट. एंड यहाँ पे अगर ये एक अप एंड डाउन दिखा रहा है, तो यहाँ पे कंसिडरेबली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अप एंड डाउन हो गया है ऑलरेडी. 3-4 इसने तब तक मार दिया है. ये एक पंच मार रहा है तो ये 3 पंच मार दे रहा है. सो मिड कैप ऑल्सो सिमिलर थिंग, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है. निफ्टी 50 एक लेग फॉर्म कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट ले रहा है. अगेन सेम सिचुएशन, बिकॉज दे आर आवर ओन मार्केट, so they will of course behave in a similar way. But generally what I have seen is that small cap, then mid cap, then large cap falls. तो पहले स्मॉल कैप गिरता है, पहले फिर मिड कैप गिरता है, फिर लार्ज कैप गिरता है. जरूरी नहीं है ऐसे गिरेगा, कई बार पहले मिड कैप गिर जाता है फिर स्मॉल कैप गिरता है. बट गिरते ये दोनों पहले में से, स्मॉल कैप और मिड कैप में से वन विल डेफिनेटली फॉल डाउन, राइट. सो नाउ वी विल सी, किसको देखेंगे? बैंक्स. जल्दी जल्दी देखते हैं. बैंक्स देखो, आईडीबीआई बैंक नीचे है, सिटी यूनियन बैंक कंसोलिडेट कर रहा है ना. एंड दिस इज अ वॉल्यूम फैक्टर दैट इज डिस्प्लेइंग. वॉल्यूम क्या है अगेन आप देख सकते हैं, है ना. वो आज के क्लास के स्कोप के बाहर है. एक्सिस बैंक इफ यू सी काफी नीचे आ गया है. एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन आपको दिख रहा है, बहुत नीचे आ गया, बहुत जबरदस्त गैप डाउन, बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है ये, है ना. एचडीएफसी बैंक लक्ष्मण रेखा के नीचे आ चुके हैं भाई साहब, बी केयरफुल दोज आर होल्डिंग. आ गया है. आईसीआईसी बैंक नीचे आ चुका है, ठीक है. तो इफ इट ब्रेक्स such kind of lines and breakdowns from this location, please bear the strong loss and can be exited kind of thing. नहीं तो क्या है, बहुत नीचे जा सकता है यहाँ से. स्टेट बैंक स्टिल अप, दिस इज शोइंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ. बाकी बैंक्स जब लक्ष्मण रेखा से नीचे दिखा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इट इज होल्डिंग द लेवल अप. और यहाँ पे जो है यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, साइडवेज भी जा सकता है. बट compared to the other banks, this is showing some kind of strength that this can be monitored for a period of time. पीएनबी नीचे आ गया. फाइनेंसेस अगर आप देखोगे, बजाज फाइनेंस डाउन है, ये देखो. हाँ, बजाज फाइनेंस हो गया. एसबीआई कार्ड ये भी डाउन हो गया. स्मॉल फाइनेंस बैंक जाना, ये भी डाउन हो गया लक्ष्मण रेखा के नीचे. तो ये फाइनेंशियल एंड एनबीएफसीज बैंक्स, ये मन्नापुरम फाइनेंस थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट नॉट अवेयर ऑफ कि कितना ये कर रहा है, होल्ड कर पाएगा. जब तक ये ओवरऑल मार्केट ठीक नहीं होता है तब तक यहाँ पे इनको एंटिसिपेट करके ज्यादा कोई फायदा है नहीं. हमारा प्राइमरी चीज क्या चाहिए? दिस थिंग्स शुड मेक सम काइंड ऑफ बेस एंड शुड गो अप. चोला होल्डिंग देखो, सब नीचे आ गए ये सब. ये देखो यहाँ पे बहुत सारा ऊपर हमें वीक्स दिख रहा है, लंबे लंबे वीक्स दिख रहे हैं. श्रीराम फाइनेंस डाउन, होम फास्ट डाउन, है ना. यहाँ पे इसने, मैं यहाँ से यहाँ ट्रेड किया था इस लोकेशन तक, ठीक है. एंड
उसके बाद आई कंटिन्यू टू होल्ड एंड यहाँ पे जो है कुछ पोजिशंस यहाँ पे मैंने निकाले थे, कुछ यहाँ पे निकाले थे एंड कुछ पोजिशंस ये कैंडल फॉर्म हो जाने के बाद मैंने निकाले थे एंड इस जनरल एरिया से लगभग ये जो मूव किया था अप्रोक्सीमेटली 15-16% मूव किया था. आई कुड ओनली कैप्चर 8 to 10% because I did my partial exits in this. LIC हाउसिंग फाइनेंस डाउन, पॉलिसी बाजार डाउन आके फिर साइडवेज जा रहा है. बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इट इज कमिंग बिहेविंग एज पर द इंडेक्स. इंडेक्स जैसे बिहेव कर रहा है ये भी वैसे बिहेव कर रहा है, बट इंडेक्स अभी साइडवेज जा रहा है, ये ऊपर ऑलरेडी चला गया है. तो दिस इज वन ऑफ द indications it is giving is some strength it is getting as compared to the broader market. पेटीएम देखो, पेटीएम इज क्यों दिखा रहा हूं मैं, ये कुछ अलग ही काम कर रहा है मार्केट में. जब भी मार्केट गिर रहा है ये ऊपर जा रहा है. वाई आई एम शोइंग दिस या पंकज, पंकज है क्या? डोले जा. हाँ जी सर. हाँ, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है. वाई आई एम शोइंग दिस चार्ट. सर ये तो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले काउंटर्स में है वैसे तो, हाँ बट ये ऑपोजिट जा रहा है. हाँ, तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये, क्या बता, हमें क्या बता रहा है? ऑलरेडी लक्ष्मण रेखा के ऊपर जा रहा है और काफी ऊपर जा भी चुका है. एक यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंसोलिडेशंस बनाया, फिर ये और ऊपर भी जा रहा है. तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल अस? दिस कैन बी दी, जब निफ्टी हमारी डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड में जाएगी तो दिस वुड बी दी न्यूएस्ट मार्केट लीडर बेसिकली, जो लीड करेगा मार्केट को. परफेक्टली फाइन, एब्सोल्युटली बैंग ऑन भाई. तो आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे अगर ये मार्केट हल्का सा कंसोलिडेट करता है, आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हियर. छोटे छोटे कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट देना चाहिए, राइट? और फिर ये जब ऊपर जाएगा, जब मार्केट ब्रॉडर मार्केट ठीक हो जाएगा, ऐसे टाइप के ट्रेंडिंग में आ जाएगा, इट विल ब्लास्ट ऑफ एंड इट विल सुपर शूट. अगर ये चीज हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ, तब ये जाएगा. मार्केट साइडवेज नहीं हुआ, नीचे गया, तो ये आराम आराम से ऊपर जाएगा. बट ये ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाएगा. ये देखो एक ट्रेंड ये कैरी करता है तो ये बढ़िया जाता है ऊपर. ये जब ट्रेंड शुरू होता है इसका बेस से, तो लगभग 140% ये मूव कर जाता है. तो 140% अगर यहाँ पे मूव कर गया है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से एटलीस्ट 80% तो जाएगा, 70% तो जाएगा यहाँ से, इस बेस से, राइट? तो अगर उतना भी आप एक पॉजिटिव स्पेकुलेशंस लगाते हैं, हम अगेन विथ डाटा, हम वेड स्पेकुलेशंस नहीं लगा रहे हैं. डाटा हमें क्या बता रहा है कि अगर 140% प्रीवियस पास्ट इसका दिखा रहा है, 70% ही जाते हुए 1700 रुपये में पहुंच जाएगा ये. बट होल्ड कब तक करना है? जब तक लक्ष्मण रेखा के ऊपर है, ट्विन ब्रदर्स, उसके बाद नहीं होल्ड करना है, ठीक है? सो ये सारी चीजें यही बता रहा है कि कई बार ये जो मार्केट लीडर्स तैयारी करते हैं ना ऊपर जाने के लिए, ये हमें और एक इंडिकेशंस भी देता है कि निफ्टी शॉर्टली इट विल बिकम साइडवेज एंड बी रेडी और रिज्यूम इज अप ट्रेंड. निफ्टी का जनरल पाथ ये जो अप ट्रेंड है, इट विल रिज्यूम. तो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ दिन में ये जो टैरिफ ट्रेड वार चल रहा है ये सेटल डाउन हो जाएगा. द मार्केट मेकर्स विल डाइजेस्ट दिस न्यूज एंड अगेन स्टार्ट प्लंकिंग. तब तक हमें ये हैंगसेंग बीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे पैसे घुसाया है, तो पैसे निकालने के लिए तो नहीं घुसाता है ना वो बड़ा, ये बड़ा कैंडल. यू एंड मी वी कैनॉट मेक दिस काइंड ऑफ कैंडल. जब हैवी पैसा घुसता है तभी ये कैंडल बनता है. तो ये तो घुसाया है किस लिए? प्रॉफिट बनाने के लिए. तो थोड़े दिन ये भी चलेगा, चाहे इतने ही दिन चल जाए, 5 6 7 दिन 8 दिन, है ना? डेली चार्ट देख रहे हो, अगर ये भी थोड़े दिन चल गया तो दैट मीन्स निफ्टी थोड़े दिन साइडवेज भी जा सकता है और हल्का सा झटका देकर नीचे जाके फिर रिज्यूम कर सकता है. बट पेटीएम इज नो डाउट इट इज वन काइंड ऑफ लीडर. जस्ट कीप ऑन चेक ऑन दैट, कीप ऑन watching that stock, find out appropriate level to enter. So हमने देख लिया है, we have understood, हमने सारी चीजें डिस्कस कर लिया है, लीडर्स भी देख लिया है. एंड वॉच लिस्ट अगर आप पूछोगे तो ये मेरा वॉच लिस्ट है, ठीक है? वॉच लिस्ट काफी रेड में दिख रहा है, देखो बहुत कम ग्रीन दिख रहा है. अगर ऐसे ही मैं घुमाऊंगा सिर्फ आपको, है ना, तो रेड ज्यादा दिख रहे हैं आपको एज कम्पेयर टू द ग्रीन.
अगर ये अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो इसमें क्या करता है, ये हमें क्या दिखाता, ग्रीन और रेड सेम टू सेम दिखाता है, ग्रीन बहुत ज्यादा दिखा देता है। तो ऐसे नहीं है, विल सी, देखते हैं। सो ये आ गया हमारा वॉच लिस्ट। तो हमने, सो व्हाट वी फाउंड आउट, what is this is that's it is the situational awareness of current market that we did right now. So what we should decide now after understanding all these things, Siva? Doesn't look very encouraging that ways, matlab the entire market, but some particular sectors and stocks, they are still a safe haven to, I think, invest in. Yeah. So Raja bhai, anything? Sorry sir, I missed the question. हाँ, मतलब हमने ये पूरा सिचुएशनल अवेयरनेस हमने कर लिया है. सो नाउ व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग आफ्टर कैरिंग आउट और अंडरस्टैंडिंग दी काउंटर्स दैट आर इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स मार्केट लीडर्स. तो अभी हम किस स्टेट में है, क्या हमारा एक्शन होना चाहिए करेंटली? सर एज पर मी सिचुएशन अवेयरनेस के हिसाब से अभी तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है कि कहीं जंप करना नहीं है, सिर्फ करेक्ट, वेट एंड वॉच है, और कंसोलिडेशन ऑब्लिक डाउन ट्रेंड के चांसेस हैं फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, बिल्कुल एंड उसके बाद मे बी देयर आर चांसेस टू अप ट्रेंड विल रिज्यूम, बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी वेरी ब्राइट. करेक्ट. तुरंत घुसने लायक मार्केट नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है, करेक्ट. तो आई होप ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस कुछ क्लैरिटी ला पाया, दैट एफर्ट. एंड वन मोर थिंग सर, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि अभी मार्केट में नहीं घुसना है टाइप्स, दिस इज हाँ, बेसिकली फॉर स्विंग ट्रेडिंग. मतलब हाँ, लॉन्ग टर्म वाले को तो डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वी नो इंडियन इकोनॉमी शुड डू गुड, तो करेक्ट, गुड स्टॉक्स विल डू गुड, बट फॉर स्विंग ट्रेडिंग ये अभी दिख नहीं रहा मार्केट. करेक्ट, करेक्ट. So if you speak about a short-term kind of thing, about 20 days, 25 days, or 1 month kind of thing, so market it is a no investment zone as of now. अविनाश भाई, हेलो सर। हेलो. हाँ, हाँ. हाँ जी तो सर। बताओ, तुम्हें कुछ पता लगा इसमें से? हाँ सर, मतलब बेसिकली अभी द वे डुडेजा टोल्ड कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड वी हैव टू बी रेडी इन केस वी फाइंड गुड स्टॉक्स एट द राइट टाइम, सो वी मस्ट बी रेडी टू grab on that opportunity like Paytm which you have just discussed. Correct. So first of all, we must watch how this consolidation is panning out in Nifty 500, and in conjunction to that, how these counters are performing and how this is performing. Yes, one thing I missed out, that is Bitcoin. Bitcoin is also one of the leading indicators that help us to understand the things. Bitcoin ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाता है, and Bitcoin नीचे आता है तो हमारा मार्केट भी नीचे जाता है. If you see here, right? So Bitcoin is a good indicator. So it is a leading indicator to our market, है ना? तो इसको मैंने यहाँ पे actually ऐड नहीं किया था. Let me add it in directly proportional, क्योंकि crypto was one of the point. तो crypto is basically it is a leading indicator kind of thing. जैसे डॉलर एंड USD INR is a leading indicator and tell us in advance that market is going to move down. Even India weeks, dollar, everything tell us in advance. Similarly, these in advance they tell us कि what our market is going to do. हमें क्या है, हमें इंडिकेटर का मतलब क्या है? हम लेफ्ट साइड लेने से पहले पहले हम इंडिकेटर जलाते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं, या राइट साइड में मुड़ने से पहले पहले गाड़ी का इंडिकेटर जलाते हैं, फिर राइट साइड में मुड़ते हैं. तो दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इंडिकेटर्स. तो हमें कोई एडवांस इन्फो पहले बता दे कि मार्केट क्या करने वाला है. बट कई बार ऐसे भी होता है कि लेफ्ट इंडिकेटर दिखाते हैं हमने, फिर हमें वो गूगल मैडम बताती है जीपीएस कि नहीं नहीं ये तुम गलत मुड़ रहे हो, आगे मुड़ना है. तो हम क्या है, लेफ्ट इंडिकेटर दिखा के उसको फिर बंद करके फिर और आगे निकल जाते हैं, फिर लेफ्ट इंडिकेटर दिखा के मुड़ते हैं. तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है. तो दैट मीन्स व्हाट, इंडिकेटर्स को लेना है सीरियसली. मोस्टली वो सही दिखाते हैं, बट कई बार वो आपको मिसलीड भी कर लेते हैं. सो जब तक गाड़ी लेफ्ट टर्न नहीं हो जाता है, कंफर्म नहीं हो जाता है लेफ्ट टर्न हो गया है करके, तब तक जो है हम एंटिसिपेट नहीं कर रहा है कि राइडर जो है लेफ्ट मुड़ने वाला है या मुड़ गया है ना? मुड़ने के बाद ही हमें पता चल गया नहीं नहीं राइडर तो लेफ्ट मुड़ गया है, अभी कंफर्म है ये. बट हम पहले से ब्रेक मार के स्लो कर लेते हैं. तो ब्रेक मारना हमारा काम है बाई सीइंग दिस इंडिकेटर्स, या एग्रेसिव होना हमारा काम है बाई सीइंग दिस इंडिकेटर्स. ठीक है. सो
These will help you also to understand the situation and also active as kind of leading indicators in the market, right? So as we discussed, we understood कि इस market में buy करना है कि sell करना है कि या hold करना है. तो as a swing trader, I must tell that कि we will not buy anything. If you ask me what is my current state, as of now I am 90% back in cash. Only 10% are invested for swing trading, and those 10% also I have only invested in which I will be strictly monitoring them. If a slight weakness is visible, I will cut off and run away from the market. Important thing is what? To save our hard-earned money, right? So let's come back to our presentation. So this is the relationship we found out. I hope this slide is now clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. So that means one has to understand most important thing in market. Here we are competing with fund managers, both foreign and domestic, who possesses crores of capitals and decades of experience. We are fighting out with people who have 20 years, 25 years of experience in market and have a lot of capital. So if one wrong move, one wrong mindset, one wrong mentoring, they will digest all our money. So how they will digest? ये ऐसे खा जाएंगे पूरे पैसे, हल्का सा रॉन्ग मूव, और ये पैसे जो है एवरीथिंग इज आवर हार्ड एंड मनी. So you see this big fish, he is digesting all the small fish. So situational awareness is nothing but threat response, right? As I said, it is understanding the battle indicators and pressing the brake, or we can say that it will help you to plan better to tackle the current situation. Remember one thing, friends, even a seed need to be positioned in soil in a right environment to germinate, to grow into a stack, and then into a plant. Similarly, money must be positioned in market under right environment, under right guidance, and this environment you can only assess by having an insight of this situational awareness. With this, we end our meeting today. I hope it was some fruitful to all of you. Amazing concept, lot of insight, wealth, and those quick fix solution anybody can give, sir. But the kind of deliberation that you have actually given is very, very precious, I would say, sir. Because knowing that case, ऊपर आ गया, buy कर लो, इससे ऊपर आ गया, नीचे आ गया, sell कर लो is a different thing. But the entire concept behind it and understanding it and then further building on it is one of the rare things that nobody, you'll not find it anywhere, sir. And giving so much of time while you know a thing. But we may not realize, we find it that this is just an ordinary thing. These are working in favor, these are against. But I can, with my experience, I can tell you, sir, this is a very, very precious value addition. Thank you so much. Thank you then. So Thank you, sir. Thank you for the fruitful session. Thank you, Avinash. Thank you, भाई Dodeja, and thank you all of you for being with me. इस presentation की कल मैंने सोचा कि यार कुछ तो बने, तो I thought कि let's make me some yardsticks, some pointers that will help me to channelize my thoughts and again merge with your thoughts. Then only this whole sessions that we have carried out will be fruitful. So that was the only endeavor. कल तो मैंने ये प्रेजेंटेशन रात को 10:30 बजे बनाना स्टार्ट किया और 2:30 बजे तक ही बनाता रहा मैं. तो whatever